यही काम आ गया Dona Shakir Palatia Ravea Menu Tere Vinano Vina Saravia Menu Tere Vinano Vina Saravia Sona Shakir Palatia Ravea Menu Tere Vinano Vina Menu Tere Vinano Vina Teleyara Vichasaya Rai Jala Devaya Teleyara Vichasaya Rai Jala Devaya Tere Bala Vichakoina Kinara Jaleya Menu Tere Vinanu Vina Saralavia Sona Shakir Pala Piara Lavea Menu Tere Vinanu Vina Saralavia Menu Tere Vinanu Vina Saralavia Sare Tiratanaye Ore Guna Vita Paye Sare Tiratanaye Ore Guna Vita Paye Chole Bhagave Paye Na Piyara Veya Menu Tere Vinanu Vina Saralavia Sola Shakir Palatia Ravea Menu Tere Vinanu Vina Saralavia Menu Tere Vinanu Vina Saralavia Jagatundalaya Sara Nire Koina Sahara Jagatundalaya Sara Nire Koina Sahara Tere Bala Vicha Koina Devara Chadeya Menu Tere Vinanu Vina Saralavia Sona Shakir Palatia Ravea Menu Tere Vinanu Vina Saralavia Menu Tere Vinanu Vina Saralavia
Ajeva Jasatera Gaye Sachanama Diyaye Ajeva Jasatera Gaye Sachanama Diyaye Jagatakiya Sara Jagasara Jageya Venute Nina Saramalia Sona Shakire Palatiara Madeya Venute Nina Saramalia Venudere Ina Saravalia. Page 256. Guru, 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 Vole, Prem, Se, Guru, 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 Vole, Prem, Se, Guru. Vade, vage, Mahanasatane, Paya. Ise kalave mutale, jitena nama de asa ketahem, utena nama de hale. Vade vage manasatane paya, ise kalave mutale. Jitena nama de asa ketahe, jitena nama de ale, jitena soya baki bajoteke, abito anke kole preme se guru, 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 guru. Guru, 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 Bole, Preme, Se, Guru, Guru. Jisne feri sachin manse, Guru Nama ki mala. Jitne vede varamete mitege, esa hua ujala. Jisne feri sachin manse, Guru Nama ki mala. Jitne vede varamete mitege, esa hua ujala. Guru Nama ka amrit pile, जीवन मेरा से गोले प्रेम से गुरु, 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 बोले प्रेम से गुरु. Tapo shapo santa pomitata, Guru kapavane nam. प्रेम भावे के भूखे सतगुरु कृष्ण का हो या राम. तापो शापो संतापो मिटाता, गुरु का पावन नाम. प्रेम भावे के भूखे सतगुरु कृष्ण का हो या राम. जो पल सिमरन में बीते हैं, वे पल के अनमोल प्रेम से गुरु, 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 गुरु बोल प्रेम से गुरु, 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 गुरु
ya kiya jab viva gitone nange peron dodaya sada dine ko gaya sada dia ture vale ko sahara ya kiya jab viva gitone nange peron dodaya Saravine ko gaye gaya Sadadiya dure pale ko sahara Ke naam ki palji Ajay mera bole prem se Guru 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 bole prem se Guru Oh, yes, coming. That's okay. Ah, Shubash. Thank you, thank you. आराम से आराम. हम अपने गुरुदेव सोमाजाय के चरणों में नमस्कार करते हैं, जिन्होंने दया करके इस गरीब आत्मा को अपनी सेवा के लायक बनाया. I pray to the feet of Somajab that they've made this poor soul fit for doing some seva. हालांकि बाबा सोमनाथ महाराज जी का जीवन काल समय 3 साल ही रहा, लेकिन अजैब सिंह महाराज जी का सेवा 11 साल मिला. I had the good fortune to do the seva of both the masters. For Somnath Babaji, I got only 3 years, and for Ajay Singh Ji, I got 11 years opportunity to do seva. जब हम 74 जनवरी में सोमनाथ महाराज जी के पास गए, हमने 1.5 महीने बॉम्बे में सत्संग सुना था, वो भी हिंदी और मराठी. वो सुन करके ही मेरे अंदर संस्कार पैदा हुआ दर्शन का, और 1.5 महीने में सत्संग सुन के जो सुनते थे वही मनन करते थे. किसी से बात नहीं, चीत नहीं, आज सुना तो आज का सत्संग मनन करना. इस तरह से 1.5 साल में विरह पैदा हो गया. Before I went and met Somnath Babaji, about 1.5 months before that, I listened to the satsangs of Somnath Ji, and those were in Marathi and Hindi. But I listened to those satsangs, and the whole day I would keep thinking on what he is saying. Throughout my work and otherwise also, I kept thinking on how and what he is trying to say and what we should be doing. And that way I got very strong impressions.
from these satsangs, very strong motivation, and then I went to meet him. तो मैंने जो पढ़ा था कि रेलवे गुंटकल में चेंज करना पड़ता है बेंगलोर के लिए और बस डायरेक्ट जाती है, तो मैंने बस का टिकट निकाल के पेमेंट के दिन मिल में पेमेंट था, पेमेंट लेके मैं माँ बाप से पूछा नहीं और 1.5 महीना सत्संग सुन के विरह पैदा हुई थी, गुरु के दर्शन की तड़प पैदा हुई थी और मैंने बस से निकल गया बेंगलोर। So I found out that by train I have to change the station at the Guntakal junction, but there are direct buses to go to the ashram. And I had made up my mind to go there because I had very strong pangs of separation from thinking about him all the time for nearly 1.5 months. So on the day I got the salary from the mill, I immediately went to the station. और कहते हैं कि कहानी बड़ी लंबी है। एक महाराज ने हमें नाइट ड्यूटी दिया और रात को 111 एकड़ का पहरा करना पड़ता था, तो 1.25 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का एरिया होता था। नाइट ड्यूटी सुमरन करते हुए ड्यूटी करते थे, सुमरन नाम मिलने के बाद सुमरन करते हुए ड्यूटी करते थे। ऐसा एक 6 महीना लगातार रात भर सुमरन करने से रूह चढ़ाई करने लगी। Then I got, when I went there, I got the opportunity to do seva, and I used to have the night duty to do seva. The area and expanse of the ashram was more than 100 acres. It was nearly 1.5 kilometer walk every night. So I used, whenever I went for that walk around the periphery of the ashram, I would keep doing Simran. तो So this way, nearly 6 months passed, and by doing that continuous Simran, the withdrawal had started. तो कहते हैं लगातार रात भर सुमरन करते घूमने से 6 महीने में महाराज के सामने बैठते थे, आंख से पानी चालू होता और रूह चढ़ाई करने लगते थे। हमने कभी आंख बंद नहीं किया। So that way, I got such strong pangs of separation, and the Simran helped so much that whenever I would listen to him doing the satsangs, the withdrawal from the body of the soul would start immediately, and my eyes would keep watering. I would keep crying in the pangs of separation. तो तड़प थी, तो इस तरह से महाराज की कृपा 6 महीना में हुई और धीरे धीरे सिमटाव होने लगा। और कहते हैं कि उनकी बड़ी कृपा थी कि 3 साल उनका समय काल सेवा का मिला। So that way, I had very strong pangs of separation from him. It was his grace that was showered on me, and in that 6 months' time, I could get the withdrawal, and I got the opportunity to do his seva for nearly 3 years. तो कहने का मतलब कि सत्संग सुन के इस कान से सुन के इस कान से निकाल दें, हम जब तक अमल नहीं करेंगे, उस पर चलेंगे नहीं, तो सत्संग रंग नहीं लाता। So the point of saying all this is that when we listen to satsangs, we should try to implement what is being said by the masters. If we listen from one year and leave it from the other year, then it will not bring about that transformation within us. अगर हम संतों के वाक्य पे चलना चालू करेंगे, अपनी रहनी बनाएंगे, तो हमारे अंदर परिवर्तन सेंट पे सेंट जो आता है, जरूरी है। When we start walking the path and according to the teachings of the master, then 100% we have the effect. We have a positive effect, which is 100%, and we definitely bring about that transformation. और संतों का दिया हुआ सुमरन करने से चलते फिरते काम करते अगर हम सुमरन की आदत डाल लें, तो हमें जल्दी गुरु की कृपा का हाथ सिर पे आ जाता है। And the Simran given by the masters, if we keep repeating that Simran
when we are doing all our normal activities like walking, cooking, or sitting. Whenever we are idle, we should do the Simran. And if we do so, then again that also has a very strong impact on us and brings about a transformation. इसके लिए गुरु के चरणों से अपार प्रेम प्यार की जरूरत है, लगन की जरूरत है। और हमारा भजन क्यों नहीं बनता? क्योंकि हमारा प्रेम प्यार दुनिया के रंग में रंगा है। For doing all this, we need to have a lot of love and affection for the master. We have to have faith in the master. And why our meditations are dry, why we are not getting that kind of um, progress on our path, that is because we have not developed that love and affection towards the master. Our love and affection is all scattered in this world outside. इसीलिए हमारा भजन नहीं बन पाता है, रूखा फीका होता है। और दूसरी बात, हम रोज रोज जो संतों ने हुक्म दिया 2.5-3 घंटे का, उतना टाइम बैठ नहीं पाते। And that is why our meditations are very dry and we are not able to get uh, that progress on this path. So, समय बैठ नहीं पाते। therefore, we are not able to also sit for that continuous 2.5 hours of in our meditations. तो संत मत में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि सदगुरु ने नामदान के दिन जो हमें बताया रास्ता, उस पे चलना। Therefore, it is very important that the masters, when they have initiated us, they have told us the path and uh, how we have to go about it. We should listen and follow what they say. It is very important. अगर हम उस पे नहीं चलेंगे तो कितने बरस भी हम सत्संग में जाएंगे, संतों का दर्शन करेंगे, फायदा नहीं मिल सकता। Because if we don't listen and act upon it, then for several years or decades you may go and listen to satsangs, but we will not get that kind of benefit. तो चाहिए कि हमारा प्रेम प्यार सदगुरु के चरणों में रखें और दुनियावी कारोबार करें। क्यों? ये दुनिया झूठी है और एक दिन साथ छोड़ देना है। So therefore, we have to make it a priority to do what our master says and follow what our master says. Do our meditations because this is the true work for which we have come here. Everything else, this whole world outside, is all false. क्योंकि हमने दुनिया को सच माना और अपना सच्चा प्रेम प्यार दुनिया के को लगा दिया, और मन रूखा फीका होने से भजन नहीं बनता। Because the we have placed all our love and affection in this world, which is not permanent and which is false. And as a result, we are not having that kind of love and affection towards our master within. Therefore, our meditations are also very dry. We are not able to get enjoyment in those meditations. तो हमें चाहिए, जो संतों ने हमें रास्ता बताया है, रोज रोज 2.5-3 घंटे की बैठक बनाएं। चाहे आप कुर्सी पे ही बैठो, पैर नीचे करके, लेकिन ऐसे ही स्थिर हो जाओ। So, therefore, it is very important that for 2.5 hours we should try to sit continuously in our meditation. Even if you sit in a chair, it doesn't matter. You sit straight in a chair, but remain still for that period. तो चाहिए कि समय का ख्याल रखें और प्रेम प्यार लेके ध्यान में बैठे। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं आता है गुरु के प्रति, तो महाराज ने बड़े अच्छे अच्छे गुरु की विरह में बाणियां लिखी हैं, भजन लिखा है। कोई भी एक ऐसी बाणी पढ़ लें जिससे हमारे अंदर गुरु के प्रति प्रेम पैदा हो। So be mindful of the time for sitting in the meditation. Follow that schedule. And when you sit for meditation, you develop that love and affection for the master. Sit with all the love and affection and faith in the master. If you are finding it very dry, then you can sing a bhajan,
written by one of the saints, because that way we will be able to bring about that love and affection before we sit. तो समय बहुत अच्छा है, वातावरण शांत है, हम सो के उठे हैं, हमारा मन शांत होता है और शांत मन ही भजन के लायक होता है। हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। हम आंख बंद करके सुमरन और ध्यान से जुड़े। The time is good and we should make the most of this time. It is early morning and the mind is quiet. A quiet mind is good for meditation. So let us make the most of it and close our eyes and get connected to Simran and Dhyan.